अस्सलाम वालेकुम। अभी हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे और सेशन का स्टार्ट जो है वो प्रीवियस जो हमने लेक्चर किया था उसकी रिवीजन करके फिर हम उसके बाद जो है आज के लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। और जो पहला पार्ट होगा उसमें हम जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज देखेंगे जो बुक में गिवन है, और सेकेंड पार्ट में हम चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन करेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि कल हमने डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस को देखा था, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें आप डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, और डाटा नॉर्मली जो ऑर्गेनाइज होता है वो डाटा जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं वो हम लेते हैं बेसिकली बिफोर डूइंग द एक्सपेरिमेंटेशन स्टेप. So during the observation, whatever data we collect, we organize it, and we make our, that is which is unorganized, that is known as raw data. So उस raw data को हम change करते हैं to information by making the raw data organized. उसके बाद हमने देखा कि डाटा ऑर्गेनाइज होता है, और उसके बाद हम अपने एक्सपेरिमेंट की मेथडोलॉजी उस पर डिपेंड करते हैं। फिर उसके बाद जब मेरी मेथडोलॉजी बन जाती है तो हम उसको एक्सपेरिमेंट फेज में चले जाते हैं। उसके बाद डाटा एनालिसिस ये होती है कि जब आपने जो भी आपके ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट्स आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, स्टैटिस्टिकल बेस्ड होते हैं, उनमें से हम जो है यूज़ करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूजिंग रेशियो और प्रोपोर्शंस मेथड्स, एंड वी कम अप विद द रिजल्ट्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स। तो उसको हम डाटा एनालिसिस कहते हैं। हम उसे एनालाइज करते हैं और फिर उसमें से रिक्वायर्ड जो रिजल्ट्स आते हैं उनको हम शेयर करते हैं दूसरों के साथ। तो अभी हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आएंगे, एक्सरसाइज की तरफ। तो कुछ एमसीक्यूज हमने कल डिस्कस किए थे, उनको हम दोबारा से देखेंगे। सो आपकी बुक में जो सबसे पहला एमसीक्यू है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड। करेक्ट सीक्वेंस बायोलॉजिकल मेथड का क्या है? जो नंबर ए पे आपको गिवन है वो ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, लॉ, थ्योरी। नंबर 2 पे आपको गिवन है हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशंस, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंटेशन। नंबर सी पे आपको गिवन है ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन। डी पे आपको गिवन है लॉ, थ्योरी, डिडक्शन, ऑब्जर्वेशंस। तो हमने ये कल भी इसको देखा था, और इसमें हम वी नो दैट द बायोलॉजिकल स्टेप स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस। सो फर्स्ट में ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आफ्टर ऑब्जर्वेशंस देयर इज हाइपोथेसिस, and after hypothesis there is not law in the step, but there is deduction uh, based on hypothesis. So observation, number A, option A is not correct. B and D also not correct, because it's starting from hypothesis and law. So number C is the best option. That which one of the following is the correct sequence in biological method? That is option C, observations, hypothesis, deduction, experimentation. Then in question number 2, which one of these is not a characteristic
of a hypothesis. So इस 4 ऑप्शंस में से कौन सी जो और स्टेटमेंट है वो करेक्टरिस्टिक नहीं है हाइपोथेसिस की. So must be consistent with all available data, must be testable, must be correct, must make predictions. So उन्होंने पूछा not a characteristic of hypothesis. So must be consistent with all available data can be characteristic. Obviously, it's the characteristic of hypothesis. A hypothesis must be testable. Hypothesis must make predictions. So hypothesis is all about making predictions. Or hypothesis is so the A, B, and D are all characteristic of hypothesis except C, because hypothesis cannot or must not be correct all the time. So हमें पता है कि hypothesis can be correct, can be uh, false also. So there are 50% chances of hypothesis to be correct, or its chances 50% to be not correct. So option C is the correct answer. Third is, at which point is a biologist most likely to use reasoning? तो रीजनिंग हमने देखा था कि वो जब ज़्यादातर रीजनिंग आपकी बुक में बताया गया है इन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. अगर आप चले जाएं पीछे पेज नंबर 22 पे, तो इधर आपको वो बताते हैं नंबर 22 पे और फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. So इसकी लास्ट लाइन है, biologists use reasoning to formulate a hypothesis. So it's the answers is already in your like for all these statements, the answers are all in the chapter only. So during hypothesis formulation, B is the correct option. A hypothesis number 4 is a hypothesis must be testable to be scientifically valid. Being testable means, अभी उन्होंने पूछा है कि हाइपोथेसिस जो है उसे टेस्टेबल होना चाहिए अगर वो साइंटिफिकली वैलिड होने के लिए. और टेस्टेबल मींस क्या है? तो हमें पता है कि हाइपोथेसिस जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन डिराइव किया जाता है. टेंटेटिव स्टेटमेंट दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो हमारे पास ऑप्शन में उन्होंने दिया है कि सम ऑब्जर्वेशन कुड प्रूव द हाइपोथेसिस इनकरेक्ट. Only a controlled experiment can indicate whether the hypothesis is correct or incorrect. The hypothesis is proven wrong. The opposite of hypothesis is tested and proven wrong. So इसका best option जो है वो A है. Sub observation could prove the hypothesis incorrect. So there can be a possibility that other observations can make the could make the hypothesis to be incorrect. तो being testable means that some observation could testable इस तरह से hypothesis हो सकता है कि उसमें कुछ options हों कि वो उसको incorrect भी consider कर सकें. Number 5, what would be the best experimental design for testing a hypothesis? That means plants require sodium. So plants require sodium में अभी यहाँ पे ये ऑप्शन मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 5th कर रही हूँ. इसमें उन्होंने कहा है कि बेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस ये है कि बीन प्लांट्स रिक्वायर सोडियम. तो अगर हम देखना चाहते हैं कि वाकई बीन प्लांट्स रिक्वायर सोडियम, तो हम कौन सा बेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कर सकते हैं इस टेस्टिंग के लिए. So options में उन्होंने दिया है कि measure the amount of sodium in a few bean plants, grow bean plants with and without sodium, look for sodium in leaf tissues, analyze root contents for sodium. So measure the amount of sodium in few
बीन प्लांट्स, फ्यू बी प्लांट्स में तो हम मेजर नहीं कर सकते अमाउंट ऑफ सोडियम, ये बेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं है. Grow bean plants with and without sodium. This is the best experimental design as compared to other three options. क्योंकि C पे उन्होंने कहा look for sodium in leaf tissues, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है. Analyze root contents for sodium, हमें कोई एक parts plant का लेकर उसमें sodium content check करने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम देखना चाहते हैं कि प्लांट बीन प्लांट्स में को सोडियम चाहिए तो हम उसे ग्रो करवाएंगे और उसका इफेक्ट चेक करेंगे, और उसके लिए हम एक कंट्रोल ग्रुप लेंगे और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेंगे. तो हम क्या करेंगे, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा वो विद सोडियम होगा, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो विदाउट सोडियम होगा, और कंट्रोल ग्रुप जो है वो विद सोडियम होगा. क्योंकि जिनमें सोडियम अगर रिक्वायर है तो हम चेक करेंगे दोनों का कंपैरिजन करके कि कौन सा प्लांट जो है वो बेटर ग्रो करता है. सो वी नो दैट ऑलरेडी प्लांट्स हैव सोडियम इन देम, सो वी विल go for the option B, grow bean plants with and without sodium. इसके बाद हमारे पास है मल्टीपल चॉइस नंबर 6, जिसमें वो statement is a gardener sees a large snake nearby. He knows that generally snakes sting, so the gardener ran away. The gardener did which of the following? So the options are used reasoning, used observation, कंस्ट्रक्टेड अ थ्योरी, टेस्टेड अ हाइपोथेसिस. अब इधर जब गार्डनर ने स्नेक को देखा तो उसने कोई हाइपोथेसिस नहीं ड्राइव किया, उस टाइम पे उसने कोई रीजनिंग नहीं की है, वो उस टाइम पे खड़े कोई थ्योरी नहीं बना सकता था. तो उसने क्या किया, उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस का यूज करते हुए, क्योंकि उसे पता है, ही नोज दैट जनरली स्नेक स्टिंग, उसको पता है कि जब स्नेक जो है वो स्टिंग बाइट करते हैं, तो सो द अटैक करते हैं, पॉइजन स्टिंगिंग होते हैं, और सो द गार्डनर रैन अवे, दे आर हार्मफुल, so he ran away. So that is his observation. So he used observation what he has about the snake, and he ran away. So option B is the correct answer. Then number 7 is scientific theory has which of the following properties? A is it agrees with the available evidence. B, it cannot be rejected. It has been absolutely proven. It does not need to be altered in the light of new evidence. अब इसमें से so it has been almost absolutely proven. C is also, it agrees also, it cannot be rejected, it has always been obsolete, it does not need to be altered. So a scientific theory has which of the following properties? So scientific theory की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट एग्रीज विद अवेलेबल एविडेंस. तो जो भी एविडेंस, जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उनसे वो एग्री कर रही होती है, इसलिए वो उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेड हो रही होती है, तो हम उसको साइंटिफिक थ्योरी कहते हैं. Experimentation is only a step of the scientific process, but it is a very important. It is a very important. Uh, there is some deduction in it. So because it always gives the biologist a correct result. सो जो एक्सपेरिमेंटेशन है इन द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट है वो आपने उसकी 4 ऑप्शन है उनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो पहला ये कि गिव्स द बायोलॉजिस्ट अ करेक्ट रिजल्ट. सेकंड इज allows rejection of some alternative hypothesis, ensures that hypothesis can be confirmed with certainty, give scientists a chance to work in the laboratory. So obviously the option A is the
a correct option that gives the biologist a correct result. एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ताकि हमें correct results जो हैं वो डिलीवर हो सकें. उसके बाद है हमारे पास लास्ट 9 ऑप्शन. You are testing a hypothesis. Students learn more if they drink before sitting for study. So hypothesis क्या है? Student learn more if they drink tea before sitting for study. तो अगर चाय पीने से पढ़ने से पहले चाय पी लें स्टूडेंट्स तो वो उनकी लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है. अब इसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए your 20 experimental students drink tea before study. You test their learning by giving questions. Your 20 students of the control group should have all experimental conditions identical to the experimental group except that अभी हमने 20 एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स उन्होंने कहा आपके जो हैं वो चाय पी के तो स्टडी करेंगे और आप उन्हें चेक कैसे करेंगे बाय गिविंग क्वेश्चंस. इसी तरह आप जो कंट्रोल ग्रुप होगा ये तो एक्सपेरिमेंटल स्टूडेंट्स हैं जो चाय पियेंगे और वो भी होंगे जो चाय नहीं पियेंगे. तो दैट इज व्हाट यू गोइंग टू टेल फ्रॉम द ऑप्शंस कि वो जो कंट्रोल ग्रुप है वो क्या एक चीज़ है जो वो नहीं करेंगे to for this experiment. So they should take tea with more milk and sugar. They should take tea before as well as during study. They should not take tea before study or after taking tea they should not sit for study. तो इसमें से क्या है जो एक्सपेरिमेंट कंट्रोल ग्रुप नहीं करेंगे स्टूडेंट्स. सो वो ऑप्शन सी है दैट दे शुड नॉट टेक टी बिफोर स्टडी. अब जो एक्सपेरिमेंटल्स क्योंकि हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स ज़्यादा सीख सकते हैं जब वो चाय पी के स्टडी करने बैठते हैं तो हम उनको चाय नहीं पीने देंगे अपने कंट्रोल ग्रुप को और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो चाय पी के पढ़ेगा और जो कंट्रोल ग्रुप है वो चाय पिए बगैर स्टडी करेगा और फिर दोनों को क्वेश्चंस दिए जाएंगे और चेक किया जाएगा. तो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो हमारे मल्टीपल चॉइसेस यहाँ पे ख़त्म होते हैं. अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है कुछ सूटेबल आंसर्स. ये आपकी बुक से ही लिए. डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ. सो थ्योरी एंड लॉ में डिफरेंशिएट करना है तो अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग जाएं तो उसमें लिखा होता है द हाइपोथेसिस दैट आफ्टर गेटिंग अ रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सपेरिमेंटेशन not being rejected are called theories. हाइपोथेसिस जो रिपीटेड एक्सपोजर होता है एक्सपेरिमेंट से और लेकिन वो स्टिल नॉट बीइंग रिजेक्टेड तो उनको हम theories कहते हैं. whereas theories that survives the doubtful approaches and continues to be supported by experimental evidence becomes a law. सो थेरीज जब सर्वाइव करती हैं डाउटफुल अप्रोचेस को और उसके बाद वो कंटिन्यूस सपोर्टेड रहती है बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं कंटिन्यूस उन पे और वो फिर भी उनसे एग्री होती हैं तो वो थेरीज लॉ बन जाती हैं. सेकेंड आपका शॉर्ट क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर बेटर इन बायोलॉजिकल मेथड. सो ये ऑब्जर्वेशन पार्ट में आपके लिखा हुआ है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट बिकॉज दे आर इनवेरिएबल मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. दिस इज द आंसर ऑफ हाउ कि कैसे वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बेटर हैं. So they are better because they are invariable, measurable, and can be recorded in terms of numbers. Okay. So this is our part 1 means question chapter number 2 finishes here and we have done with the biological method steps. What is biological method? The steps included in the biological method and then the importance of data organization and data analysis
And there is one understanding the concept part. There is one question: how the principles of ratio and proportion are used in biological method. Your answer to this question is given on page number 28 of your book. Okay, so let's move to the okay, let's close this on the we'll open our book and we'll start the introduction of chapter number 3. Okay, this is 31 page. So look at the biodiversity introduction. What is biodiversity? Biodiversity is basically driven from the word. So the term biodiversity is derived from bio and diversity. So what is diversity? It is means the variety. So diversity is a variety, and if we go for the biodiversity, then it is variety of organisms present in the ecosystem. So our earth is basically a biosphere, जो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है, the organizational level में कि biosphere कैसे आता है. सबसे पहले हमारे पास आते हैं atoms and subatomic atoms, subatomic particles. उसके बाद हमारे पास molecular level आता है, फिर हमारे पास टिश्यू लेवल आता है, फिर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आता है लेवल, फिर इंडिविजुअल आता है, फिर पॉपुलेशन आता है, फिर कम्युनिटी आता है, फिर एट लास्ट बायोस्फीयर. सो बायोस्फीयर इज ऑल टुगेदर, living, non-living things all together in the earth, on the earth, are known as biosphere. So are basically we call biosphere to our earth. So जो biodiversity है वो variety of organisms present in different ecosystems. हमने population और community में भी पढ़ा था कि there are different communities that we know call as ecosystems also. So like forest, lake, deserts. So there are the ecosystems. Forest is one ecosystem because there are a variety of organisms living in it. Desert is one ecosystem. There also a variety of organisms are living. So the term biodiversity has been derived from bio and diversity. Diversity means variety within a species and among species. So it is a variety within species. Within species की भी हमने example ली थी कि within species में हमने अगर हम example लेते हैं, so we can take the species of ants, we can take the species of frogs, fish. So within the species also there are variety, and among the species also there are varieties. So ये तो हो गया कि मीनिंग क्या है बायोडाइवर्सिटी का. तो बायोडाइवर्सिटी इज अ measure of the variety of organisms present in different ecosystem. अभी हम थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे कि 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अर्थ पे रहते हैं नेचुरली. इनहैबिट क्या इनहैबिट दे आर नेचुरली प्रेजेंट, दे आर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, but less than one third of these have been studied and catalogued. लेकिन उनमें से सिर्फ one third पोर्शन जो है वो स्टडी किया गया और उनको
कैटलॉग्ड किया, रिकॉर्ड किया गया. Diversity among the Earth's organisms is more obvious than the fundamental unity of life. अच्छा, we see that all organisms share many biological characteristics. Five principal groups of organisms are prokaryotes, protists, fungi, plants, and animals. In this chapter, we will focus on the differences among different groups of organisms. We will also see how our organisms are classified and named, and what are the concerns with the existence of biodiversity. So diversity among Earth organisms is more obvious. वो कह रहे हैं means this means that there is, we all know this fact that there are diversity among the Earth's organisms. All are different. All have their different mode of movement. They have different colors. They have different shapes. They have different habits of eating. So this is obvious than the fundamental unity of life कि ये obvious चीज है कि there is a variety of organisms present on the existing on the earth. So अब हम इस पे आ जाते हैं कि diversity of plants. Okay, plants is known as flora and animals known as fauna. So in the scientific ways, we say flora and fauna, or we say fauna and flora. So if we look at these terms, or someone speaks like flora and fauna or fauna and flora, so that means plants and animals. In diversity जो है flora and fauna की, वो in a region depends, और उनकी diversity depend किस पे करती है? Climate, altitude, soils, and the presence of other species. So इनकी डाइवर्सिटी जो है फ्लोरा एंड फोना की, वो डिपेंड करती है किसी भी रीजन में. डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, एल्टीट्यूड्स, द हाइट्स एंड द डेप्थ्स ऑफ द ecosystem of the environment, like mountains, the sea levels. So ये सब altitudes जो है वो उन पे डिपेंड करती है, soils पे डिपेंड करती है, and the presence of other species और दूसरी species पे डिपेंड करती है, because they are interlinked, they are interconnected in the form of feeding relationship. There is a feeding relationship between flora and fauna. So जो plants, जहाँ पे plants ज़्यादा होंगे वहाँ पे herbivores भी ज़्यादा होंगे, the animals who eat plants. So ये depend करता है soil presence of other species also. So biodiversity is not distributed evenly on Earth. So this is another fact कि जो biodiversity है वो evenly distributed नहीं है. It is richest in the tropics. सबसे ज़्यादा वो tropics पे होती है. Diversity मिल सकती है आपको animals और plants में. Different species मिल सकती हैं. Temperate regions also have many species, while there are fewer species in the polar. Obviously, polar regions are the coldest regions of the earth, so there is less biodiversity. Biodiversity found on Earth today is the result of 4 billion years of evolution. So they are saying that the reason of biodiversity was found is the result of 4 billion years of evolution. 4 billion years के evolution के result में आपको जो अब biodiversity जो है वो अर्थ पे मिल रही है. The origin of life is not well known to science, though limited evidence suggests that until 600 million years ago, all life consisted of bacteria and similar unicellular organisms. वो कह रहे हैं कि फिर इतनी वेल नोन तो नहीं है साइंस कि कहाँ से लाइफ ओरिजिन आया है, कहाँ से लाइफ शुरू हुई है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस जो 600 मिलियन ईयर्स अगो जो है साइंटिस्ट को मिले, बायोलॉजिस्ट को मिले, उनकी बेसिस पे वो कहते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो पहले नहीं थी,
जो ऊपर उन्होंने बताया कि 4 बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन के बाद ये डाइवर्सिटी आई है जो हमें दिखने को मिल रही है। पहले 600 मिलियन ईयर्स अगो सिर्फ जो है लाइफ जो थी वो कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया थी और सम यूनिसेलुलर